Rahim. In the last lecture, we have done with the basics that is required for the CNS pathology. We have done with the CNS composition. We have done with the CNS cells. We have done with the functions of that CNS cells. On the basis of that lecture, we have put this lecture on the topic that is CNS tumor. CNS tumor. Having said that, we are moving forward with the question that is right now in the front of your screen. Most common brain tumor. What is the answer of this question? Most common brain tumor. The answer should be and should always be metastasis. The reason behind this is that most of the tumors that are found in the CNS are not originate from the CNS cells. They come from the other organs like lungs, bones, skin, kidney, etc. Metastasis mean secondary, यानी कि CNS का जो ट्यूमर्स हैं वो प्राइमरी जो ट्यूमर है वो कम है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी ट्यूमर, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर. Primary brain tumor, the tumor that arise from the CNS cell or originate from the CNS cell, लेकिन ये कम है. सेकेंडरी ट्यूमर ज्यादा है और इसीलिए कॉमन है. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर, तो आंसर शुड बी द मेटास्टेसिस. Irrespective of the nature, the tumor is being malignant or benign. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्यूमर मैलिग्नेंट है या बिनाइन है. मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर वो जो है वो मेटास्टेसिस है. And this answer, that is metastasis, this answer should be the same for the other organs that are heart, lungs, liver, and bones. The answer should be the same क्योंकि इनमें भी secondary tumor ज़्यादा common होते हैं as compared to the primary tumor. Having discussed that, now we are moving forward. ये तो था मोस्ट कॉमन ट्यूमर. अब हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन carcinoma that metastasize to brain, lung कैंसर. और अगर लंग कैंसर में भी स्पेसिफिकली पूछा जाए तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, स्मॉल सेल कार्सिनोमा
of the lungs. Next, most common cancer that metastasize to meninges, that is breast carcinoma. Having said that, ये तो वो, और अब हम उस कैंसर के भी बारे में बात करेंगे जो कैंसर हो तो जाता है लेकिन वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता. Most common cancer that metastasize to meninges, breast cancer. Cancer that never metastasize to brain, pros, prostate cancer. This cancer never ever metastasize to the brain. Having said that, now we are moving forward. Having said that, now we are moving forward and discuss the primary brain tumor. For primary brain tumor understanding, first we do the classification of the primary brain tumor. Primary brain tumor classification. जिस ट्यूमर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे वो ग्लायोमास है. ग्लायोमास ग्लायोमास सिंपली मीन कि ये ग्लायोमास ग्लायल सेल से ओरिजिनेट करते हैं. इस सेल से ओरिजिनेट करते हैं ये जी ग्लायल सेल से. जैसा कि हमें पता है कि ग्लायल सेल 4 किस्म के होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के नेम पे जो सेल्स है जाहिर बात है उसी से ट्यूमर निकलेगा, इसीलिए हम उसको उसी के नाम से मंसूब करेंगे. तो पहला जो वो है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइटोमा. सेकंड टाइप ऑफ सेल ओलिगोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोग्लाइयोमा. थर्ड थर्ड सेल्स एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमोमा. Thank God, the fourth type of glial cell, that is microglia, having no tumor. Now we discuss second type of tumors, that are neuronal tumors, that rise from the neurons. What are their names? According to the name of the neurons, what are their names? Neurocytoma, gangliocytoma, ganglio ganglioma, and finally D net भी कहते हैं इसे. D net mean dysembryoplastic
epithelial tumor. Then we will discuss third category, that is undifferentiated tumors. Undifferentiated tumors, what are their names? इस कैटेगरी में जो ट्यूमर फॉल करता है वो है मेडुलोब्लास्टोमा. And finally, two other categories are also found. Fourth category, that is meningeal tumor. Tumors, that is meningioma. And fifth category, miscellaneous tumors. Miscellaneous tumors में primary CNS lymphoma and extragonadal germ cell tumors. और इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रागोनेडल जर्म सेल ट्यूमर्स की मोस्ट कॉमन लोकेशन, अगर तो पूछा जाए मोस्ट कॉमन लोकेशन ओवरऑल, सिंपली पूछा जाए मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर एक्स्ट्रागोनेडल जर्म सेल ट्यूमर्स, तो आपका आंसर होना चाहिए मीडियास्टाइन. और अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन लोकेशन इन ब्रेन, तो आंसर होना चाहिए pineal gland. Having said that, now we are moving forward. Now we will discuss the occurrence of these tumors in the pediatric age group and the adult people. So, most common primary brain tumor, most common primary brain tumor in children. तो आंसर होना चाहिए एस्ट्रोसाइटोमा. और इसकी हम बाद में एक टाइप पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन प्राइमरी, जो पहला था वो बिनाइन था, मोस्ट कॉमन बिनाइन.
malignant brain tumor in children. Answer should be medulloblastoma. Now we will discuss these primary brain tumors in adult people. Most common primary benign brain tumor in children, not children, sorry, in adult people. That is meningioma. Next, most common primary, but this time malignant brain tumor. Tumor in adult people. The answer should be glioblastoma. यानी कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन आपके सामने है एस्ट्रोसाइटोमा और इसमें मेडुलोब्लास्टोमा और मोस्ट कॉमन प्राइमरी बिनाइन ट्यूमर अगर अडल्ट ग्रुप की बात की जाए तो मेनिंजियोमा है और अगर लिग्नेंट ट्यूमर की बात की अडल्ट में तो ग्लायोब्लास्टोमा।